Let us see the next question. The question says that explain trade-off theory of the capital structure. That is the question. So let us read the trade-off capital structure theory. Trade-off theory of the capital structure refers to the idea that the company chooses how much debt financing and how much equity financing to use by balancing the cost and the benefit. यानी हमको क्या करना है, ट्रेड ऑफ करना है दोनों के बीच का, कितना फायदा होता है और उसके सामने कितना खर्चा है. ट्रेड ऑफ थियोरी ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली एंटेल्स ऑफसेटिंग द कॉस्ट ऑफ द डेट अगेंस्ट द बेनिफिट ऑफ डेट. तो डेट फाइनेंसिंग रेज करने का क्या क्या काइंड ऑफ नुकसान है और उसके क्या क्या फायदे हैं, उन दोनों का ट्रेड ऑफ करना है, यानी एक दूसरे के सामने उसको सेट ऑफ करना है. Trade-off theory of the capital structure primarily deals with the two concepts. The trade-off theory of the capital structure primarily deals with two concepts. One, cost of the financial distress and agency cost. An important purpose of the trade-off theory of the capital structure is to explain the fact that corporations usually are financed partly with the debt and partly with the equity. It states that there is an advantage of financing with the debt, the tax benefit of the debt financing, and there is a cost of financing with the debt. The cost of the financial distress, including the bankruptcy cost of the debt and non-bankruptcy cost, example staff leaving, suppliers demanding disadvantaged payment terms, bondholders inside fighting, etc. The marginal benefit of the further increases in the debt declines as the debt increases, while the marginal cost increases, so that the firm is optimizing the overall value of the focus of this trade-off when choosing how much debt and equity to use for financing. Modigliani and Miller in 1963 introduced the tax benefit of the debt. Later work led to an optimal capital structure, which is given by the trade-off theory. According to Modigliani and Miller, the attractiveness of the debt increases with the percent tax rate on the income. A firm experiences financial distress when the firm is unable to cope with the debt holder's obligation. If the firm continues to fail in making the payment to the debt holders, the firm will become insolvent. यानी कि अगर आप उनको रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाओगे, then in that case आपका कंपनी बंद हो जाएगा. That is called the financial distress. The first element of the trade-off theory of the capital structure considered as cost of debt is usually financial distress cost or the bankruptcy cost of the debt. यानी हम लोग ऐसा समझते हैं, डेट से जब भी हम लोग डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपने डेट फाइनेंसिंग को सर्विस नहीं दिया, देन इन दैट केस आपका कंपनी बंद हो सकता है. दैट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस व्हिच यू हैव. उसके कंपैरिजन में से इफ एट ऑल यू आर गोइंग विद द इक्विटी फाइनेंसिंग प्रोपोर्शन मोर, देन इन दैट केस से यू विल बी एबल टू से अवॉइड द बैंक्रप्सी कॉस्ट. क्यों? क्योंकि अगर कंपनी का अर्निंग अच्छा नहीं हुआ तो भी कंपनी बंद होगा, ऐसा नहीं होगा. Indirect cost of the finance distress refers to the cost of insolvency of a company. Once the proceeding of the insolvency starts, the assets of the firm may be needed to be sold at distressed price. तो अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाएगा तो कंपनी का जो फेयर वैल्यू होगा, कंपनी के जो असेट्स का जो वैल्यू उनको मिलना चाहिए, उसके कंपैरिजन में उनको बहुत कम वैल्यू मिलेगा, which is generally much lower than the current value of the asset. A huge amount of the administration and the legal cost is also associated with the insolvency. इंसॉल्वेंसी में ये सब एडिशनल एक्सपेंसेस भी होंगे. Even if the company is not insolvent, the financial distress of the company may include number of indirect costs.
cost of employee, cost of customer, cost of the supplier, cost of investor, cost of manager, and cost of shareholder. The firm may often experience a dispute of the interest among the management of the firm, debt holders, and shareholders. These disputes generally give birth to the agency problem that in turn give rise to the agency cost. The agency cost may affect the capital structure of a firm. There may be two types of conflict: shareholders, managers conflict, and shareholders, debt holders conflict. The introduction of the dynamic trade-off theory of the capital structure makes the prediction of the theory lot more accurate and reflective than in practice. तो ये डायग्राम में ऐसा बताया है कि जो भी हम लोग डेट फाइनेंसिंग इंक्रीज करते हैं उसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम लोग सिर्फ एडवांटेज ही देखेंगे, सिर्फ एडवांटेज, तो ये जो ऊपर का जो आपको दिख रहा है सिर्फ वो ऊपर वाला आपको वैल्यू मिलेगा, पर ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और एजेंसी कॉस्ट की वजह से ये जो वैल्यू है ना वो इतना ऊपर नहीं जाता है, वो थोड़ा कम ऊपर जाता है। एंड से वो जो डिफरेंस है ना, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द एजेंसी कॉस्ट, ऐसा उनका कहना है। As the debt ratio leverage increases, there is a trade-off between the interest tax shield and bankruptcy, causing the optimal capital structure. So trade-off का सिंपल मतलब ये है that you make a comparison, फायदा क्या, नुकसान क्या, फायदा क्या, खर्चा क्या, तो उसका ट्रेड ऑफ करते हो आप, एंड जहां पे भी बेस्ट दैट इज आपको वैल्यू मिले से उसको आप सिलेक्ट करते हो। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द ट्रेड ऑफ थियरी ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। वो डायग्राम फ्रेंड्स उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि on x-axis once again we have the debt financing in the capital structure, and on y-axis we have the value of the firm. ना सिर्फ अगर हम लोग डेट फाइनेंसिंग ही रखते हैं, सॉरी अगर हम लोग डेट फाइनेंसिंग नहीं रखते हैं तो हमारा वैल्यू ये रहता है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। नाउ डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करने की वजह से अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फायदे के ऊपर फोकस करते हैं, देन इन दैट केस वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म, सिर्फ और सिर्फ फायदा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ से कहीं ना कहीं पे क्या होता है, से यू हैव द एजेंसी कॉस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, और उसकी वजह से क्या होगा कि बियॉन्ड अ पॉइंट आपका वैल्यू नीचे गिर जाता है। सो एक्चुअली यू हैव अ वैल्यू लाइक दिस, दिस इज अ वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म एक्चुअली। सो जो पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डेट फाइनेंसिंग का इंट्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज से द ट्रेडिशनल थियरी एक्सप्लेनेशन।